हम लोग की आंख में क्यों ऐसा हम सब क्यों टेरी आइड हो रहे हैं? I think this is what we call magical, ladies and gentlemen, animal. I've been a part of all these trailer launches, लेकिन ये कभी नहीं देखा और ये कभी नहीं देखा. एक बार एनिमल टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. And I know you want to talk to them. तो अब एक एक करके मैं यहाँ पे उन सबको बुलाऊंगा इसको जिन्होंने बैक किया है, जिन्होंने ये बनाया है और ये जादू क्रिएट किया है. We'll start with the superstar, ladies and gentlemen, the most humble being in the film industry. Each and everyone has a story to share with जो रणबीर से जुड़ी होगी. हर किसी का एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का रहा है, and I'm sure आगे भी ऐसे ही रहेगा. With the man, ladies and gentlemen, give it up for Ranbir Kapoor. This is so emotional, Ranbir. This is so emotional, seriously. And now, ladies and gentlemen, please have a seat. Ladies and gentlemen, the man who's been there in the industry. He's been there, done that, and he's doing it again. And how? Give it up for Lord Bobby Deol. Welcome, Bobby sir. और अब जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ, she's not just gorgeous, she's amazing. And हमने उनकी रेंज अभी इस बड़े पर्दे पे देख ली. Give it up for Rashmika Mandanna. And the man, ladies and gentlemen, the visionary, जिनकी वजह से ये सब हो पाया इस बड़े पर्दे पर. Give it up for the maverick director, Sandeep Reddy Wanga. And now it's an honor, it's a privilege to invite on stage the man who's actually the strongest pillar of Indian cinema. Ladies and gentlemen, Mr. Bhushan Kumar. The producer Saab. Along with him, would like to invite on stage Mr. Pranay Reddy Wanga, ladies and gentlemen, the producer of this movie. And here's presenting the most amazing team of the movie, Animal. Please, आप लोग बैठिए. Please take your seats. Please be seated, sir. Check. All right. Ranbir, first things first, congratulations on this. This is mind-blowing, as I said. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ खाली यहाँ पे करने के लिए. We saw the response last evening in Mumbai. As I said, ये धमाका देख के हम सब teary-eyed हो रहे हैं. How emotional was that first scene? Talk to us about that, please. Firstly, good afternoon, everybody. Thank you कि आप सब यहाँ आए. आपने ऐसा response दिया हमारे ट्रेलर को, जो हम 2-2.5 साल से इतने मेहनत से काम कर रहे हैं. We work for this kind of response, for this kind of love. तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका. I think I go back to the first time जब संदीप ने मुझे ये कहानी सुनाई थी इस फिल्म की. ये करीबन 3.5 साल पहले सुनाई थी, 3 years back. And I remember जब उन्होंने नरेशन ख़त्म किया, मैं कुछ बोल नहीं पाया. मैं सीधा अपने बाथरूम में गया और मैं अपने आप को शीशे में देख रहा था, थिंकिंग कि यार ये क्या सुना दिया इसने, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं. You know, it was. See, I don't want to use the word dark because dark has a very negative meaning to it. But ये ऐसा एक किरदार, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा दुनिया था जो मैंने पहले कभी सुना नहीं था. You know, मैं संदीप का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. I've loved Arjun Reddy, I've loved Kabir Singh also. जब मैंने अर्जुन रेड्डी देखी, ये कबीर सिंह की अनाउंसमेंट से पहले जब मैंने देखी थी, मुझे लगा कि इससे बेटर लव स्टोरी कोई बन नहीं सकती. और फिर संदीप ने फिर से वही लव स्टोरी कबीर सिंह में बनाई और मैंने कहा कि मैं चैलेंज देता हूँ, ये हिट हो ही नहीं सकती. क्योंकि जो अर्जुन रेड्डी ने जो कमाल किया था, जो परफॉर्मेंसेस थे, जो म्यूजिक था, वो रिक्रिएट हो नहीं पाएगा. बट ही डिड इट अगेन
And when he offered me this film, ये मेरा सौभाग्य था. I was grateful कि filmmaker like him. हंस क्यों रहे हो आप? ज़्यादा हो गया. अच्छा, I'm laughing on the word सौभाग्य, but yeah, I was so grateful that I was given this opportunity. ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे किरदार में नहीं देखते. But listen, मैं बोलते जाऊँ. I just want to say that thank you so much. We really हम सबको बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसा रिस्पॉन्स दिया. इट रियली एनकरेजेस अस. और मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि जो आपने ये देखा ये सिर्फ 5% है. फिल्म में इससे बहुत 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 ज़्यादा है. सो प्लीज डू कम टू द सिनेमाज ऑन 1 December. Ranbir Kapoor, ladies and gentlemen. Bobby sir, this one's for you. Of course, we know कि कितनी मेहनत जाती है when you do ऐसा एक रोल. लेकिन आंखों से बड़ा सब बोल रहे हैं. Be it the teaser or here. There is so much that your eyes are saying. आपके दिमाग में क्या चल रहा था? How emotional was this journey for you? कितना सारे लोग. मैं सबसे पहले संदीप को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि जिन दिनों मैं जो मेरे करियर की सिचुएशन थी, मुझे ऐसे रोल कभी मिलना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कमाल का कैरेक्टर कभी मुझे मिल सकता है. तो एक दिन मुझे संदीप का मैसेज आया, संदीप रेडी बंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू. तो मैंने बोला यार ये सचमुच में संदीप ही है, कोई और है, मस्ती को नहीं कर रहा कोई. तो मैंने पता किया, बोलते नहीं तो संदीप ही है. तो मैंने बोला यार फ़ोन लगाओ फटाफट. फ़ोन लगाया एंड मैंने बोला चलो मिलते हैं. एंड वी मेट एंड मुझे ये आकर एक फ़ोटोग्राफ दिखाते थे. इनके पास एक फ़ोटोग्राफ थी जब मैं ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहा था, पर मैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था. तो वहाँ मेरी एक फ़ोटो खींची गई थी जहाँ मैं उसे दूर कहीं देख रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे ये फ़ोटोग्राफ दिखाई और कहा कि मैं आपको इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि आपकी जो फ़ोटोग्राफ है इसमें जो आपका एक्सप्रेशन है वो मुझे चाहिए. एंड आई सेड चलो बेकारी के दिन काम आ गया फ़ोटोग्राफ. वैसे मुझे फिल्म मिली. सो आई लव यू संदीप फॉर रियली गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. एंड व्हाट डू आई से? आई जस्ट हैव टू से दैट working with this amazing cast, and I mean, I'm a huge fan of this man out here. He is. I'm not saying मैंने इंडस्ट्री में बहुत लोगों के साथ काम किया है और सारे स्टार सुपरस्टार लोग हैं, लेकिन इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं हमारी इंडस्ट्री में, और वो उनमें से एक है. और जब मैं इससे काम कर रहा था तो मैं बस इसकी आंखों में देख के खो जाता था. He was so mesmerizing as an actor. So I'm really grateful to be part of Animal. And हाँ बहुत मेहनत करनी पड़ी, ये सब bare body करनी पड़ी हमको. पर I'm glad आप लोगों को इतना अच्छा लगा. आपका रिस्पॉन्स मैं सुन रहा था और फील कर रहा था इस वक्त जब चल रहा था प्रोमो. So love you all for being here today, and please 1 December in theaters. Thank you so much. Thank you so much sir for sharing that. Of course आंखों का खेल है जैसा मैं यहाँ बता रहा था, और उससे याद आया आंखों में बहुत कुछ हो रहा है. रश्मिका, you and lovely. Thank you so much. Rashmika, as I said, आंखों में बहुत कुछ हो रहा है. Of course, I have a serious question for you. लेकिन उससे पहले, one good quality of this man जो लगता है हर किसी को सीख लेनी चाहिए आरके से. I think आरके ना. Hi everyone, first of all. कैसे हैं आप? सब ठीक? All good? 8 and all, no? Okay. Yeah, okay. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. Thank you, how sweet. कर लो पर्सनल 1-on-1. हम तो ऐसे ही खड़े हैं. जी. Sorry for the answer for your question. I feel like one thing is he makes it very easy for his co-actors rather than I think himself on set, because the first question I think he came and asked me was do you want to rehearse before the scene or do you just like rolling directly? And that was a question that I was never asked before, because generally till I started working with Ranbir, sir, so like before I started working with Ranbir, I
As in, I used to just be like, okay, sir, we're ready, let's roll. And suddenly, here's this man who's come and asked, let's do one-on-one rehearsal and then we'll start rolling. And I realized the performance when you like rehearse with your co-actor comes so naturally and so beautifully. The chemistry builds, the rapport builds, the conversations get better. So I think that is one thing. Like I'm speaking very professionally, so it's one thing that I've learned from Ranbir sir. Right, right. There's this beautiful father-son relationship, but उसके अलावा वो दुश्मनी भी दिख रही है, violence भी दिख रहा है जैसा सर ने वादा किया था. But वो scene जो हमने अभी यहाँ पे देखा, वो कितना हिला के गया. Do you would you say that this is the best of Rashmika जो हमने अभी तक देखा है? Yes. हैं? Yeah. She said it, ladies and gentlemen. The breaking news. Sir, I really have to give it to Sandeep, sir. I really have to give it to Ranbir because I don't think I have seen myself doing a character like this. And Ranbir is such an intense performer. So if you have to share a screen with him, so matlab you have to be good enough. And I didn't think I was good enough, but I think Sandeep got it out of me. So all credits goes to this man here and this man here. Because we love you, Rashmika. See, सबकी तरफ से मैं कह दे रहा हूँ चांस पे डांस. Thank you so much. तू सब बोरिंग सवाल कर रहा है, तो वो असली कंट्रोवर्शियल आंसर्स इधर से आने वाले हैं. आ रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ. So, Sandeep sir, thank you so much. Rashmika, Sandeep sir, this one's for you. जैसा आरके ने बोला, अब जरा कुछ मसाला लाते हैं. आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमारी मुलाकात हुई थी, आपकी पहली हिंदी मूवी थी, है ना, कबीर सिंह विद टी सीरीज, तब आपने कहा था अभी तुम लोगों ने देखा नहीं है वायलेंस. उसके बाद भी हमारी ये बातचीत हुई थी. तो अब ये उसका बदला निकाला गया है, like you are like all out over there, और this is just the beginning again. नहीं, वो अपना प्रेस मीट नहीं था, वो दूसरा प्रेस मीट था. सर, हमारी भी बात हुई थी सर. Good afternoon everybody and thank you so much. This is more than physical violence, it's mental violence. Right. More internalized. Right. Last time, sir, ऐसा कुछ मारधार नहीं हो रही थी, but still there were so many fireworks. यहाँ तो proper होने वाला है. So talk to us about that and your journey, with Animal, because ये इतने दिन से चल रहा है. People have been talking about this. The actors, उनको हर जगह बस यही पूछा जाता है. So you tell us about your journey and how was it for you? Like Animal, आपके लिए क्या था? ये है बैठा हूँ. It's more than 3 years. I'm into this story, into the screenplay, into the characters, and it's a long journey. We had great time. We had great actors. Working with Ranbir Kapoor is for a second-time filmmaker. It's actually it's a big thing, a great opportunity. नहीं इनको ऐसा लगता है, but वो बड़ी बात है. वो पता है, right? For a second-time filmmaker to get a chance with Ranbir, and I was very excited when I got to know that we'll be working. And once I started narrating the story, and the rest fell in place. Yeah, उसके बाद था जर्नी, लंबा जर्नी. और कुछ पूछो, मैं बोलता हूँ. सर कुछ बताओ, मसाला सर सबसे ज्यादा आपको असली आप बताओ. मसाला वहाँ से मिलेगा. अभी आते हैं. We'll come to that मसाला. मुझे थोड़ा हद में रहना पड़ता है. भूषण sir, this one's for you. One of the strongest pillars of Indian cinema, as I said, of course, that goes really well with, of course, यहाँ sitting with this team, the kind of response that you've got, और इतना सारा जो buzz already create हो गया है Animal को लेके, what do you have to say, sir? Thank you very much everyone for the great response. Yesterday we got a great response from the Bombay press, and same thing we are getting here, and thank you very very much for that. As Sandeep rightly said, we have given our 3 years, means all of us, hard work, especially means Ranbir. You have seen him in so many characters in this. Everybody has worked great, Bobby sir and Rashmika and the entire cast, and obviously Anil sir, means he has done a great job in the film. So me as a producer, very very happy with the film. I have seen the film I think thrice, and it's mind blowing. Means I can't thank Sandeep to make this film with us. And we have worked in Kabir Singh before, had a we've got great love from you on that film. So we are expecting the same love on this film on 1st of December.
Thank you so much, sir. Thank you so much. Pranay, sir, quickly, if you have to, add something to that as a producer of Animal, and of course the kind of response that we've just got. Thank you, Delhi. We got amazing response from Bombay yesterday, and I see that today in Delhi. So we are looking forward for the movie. We know the movie is going to hit, but अभी कितना बड़ा hit होगा, time will decide. And I'm very happy working with RK. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. And as Ranbir said, अब आएंगे वो सवाल तो अंदर के एनिमल को जगाइए. And over to you. चलिए. कहाँ से? Where are we taking the first question from? संदीप सर, आप अपना कुर्सी यहाँ ले आओ. Yes. हम लोग को माइक की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही जोर से बोल दो. When Sandeep ने मुझे कहा कि for the antagonist part he's going to cast Bobby sir, मुझे याद है कि जब बरसात फिल्म रिलीज हो रही थी और जो भी बॉबी सर ने उस फिल्म के बाद जो भी किया, आई रिमेंबर व्हाटएवर ही यूज्ड टू डू ऑन स्क्रीन. अगर जो उनके वो ब्लू कलर के जो चश्मे थे, द वे ही यूज्ड टू वेयर हिज वाइट शर्ट एंड जीन्स, उनकी जो यूज्ड टू वेयर अ पर्टिकुलर डीजल ब्रांड उनके जीन्स पहनते थे, मैं हमेशा जहाँ भी जाता था मैं लिखता था बॉबी सर ने ये पहना था, वो सेम चीज़ शॉपिंग करता था. सो आई हैव रियली ग्रोन अप वाचिंग हिम. वी मेट सोशली, बट जब इनके साथ काम करने का मौका मिला, आई थिंक वी बोथ आर वेरी सिमिलर पीपल. वी बोथ आर, if I can say, very family Punjabis. तो एक इंस्टेंट कनेक्शन हुआ. आई रिमेंबर कि हम लंदन के -3, -4 डिग्रीज पे शर्टली शूट कर रहे थे फॉर अराउंड 12 to 15 days, बट देयर वाज सो मच वार्मथ बिटवीन अस कि हमें ठंड नहीं लगी. सो आई थिंक ये ऐसा रिश्ता है that I will really cherish for all my life. So thank you Sandeep sir for bringing us together, and thank you Bobby sir for being part of Animal. Love you, Ranbir. हेलो, दिस इज सीमा धवन. बॉबी सर को भी बोले लो. हाँ नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मतलब रणबीर मुझसे बहुत छोटा है, तो जब मैं कभी बाहर जाता था इतना भी छोटा नहीं हो. लेकिन मुझे आज भी याद है, जब भी मैं कहीं गया हूँ कोई पार्टी पर या कहीं भी, तो मैं रणबीर से मिलता था, हमेशा बहुत प्यार से मिलता था, बहुत रिस्पेक्ट देता था. लेकिन मैं जब इसको हमेशा नोटिस करता रहता था कि इसमें एक जो स्टाइल है, इसकी पर्सनैलिटी है, और ये भी डांस फ्लोर पर जाता था, देयर वाज नोबडी बेटर देन हिम ऑन द डांस फ्लोर. And I used to just think that one day when he comes on screen, he's going to really kill it. He's going to be the best. And I guess here I am working with Ranbir, my favorite actor, and it was wonderful working with him on the first day. We shot together in London, and it was just amazing. I mean, I'm telling you, I felt so overwhelmed working with him. It was just some of the most beautiful moments of my life, working with Sandeep, Pranay, Ranbir, and the whole unit. It was just the day when my shooting got over, I was like, I got up in the morning feeling sad. I said, "अरे shooting खत्म, अब मैं इनसे इतने हर दिन ऐसे नहीं मिल पाऊँगा." पर हमने at least spend किए वो 12-15 दिन साथ में, so I'm always going to cherish those moments with me. कमाल की फिल्म है कि यहाँ पे जो फिल्म के आप निकाल के लाएंगे, इसके अंदर जो मार धाड़ है बहुत जबरदस्त है और कहीं ना कहीं इमोशनल भी चलती है. तो संदीप सर के साथ जो थोड़ा सा दूर है, उनका फोन नंबर लगेगा. आई थिंक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से इतने ओरिजिनल राइटर है, इतने ओरिजिनल डायरेक्टर है, इनका कोई भी मोमेंट, कोई भी सीन ऐसे आपने कभी लाइफ में कभी देखा नहीं है, कभी महसूस नहीं किया है. हम कितना बात करते थे सेट पे कि ये सब संदीप के पर्सनल लाइफ में ये सब हुआ होगा, बिकॉज ये कहाँ से लाता है ये सब आइडियाज़. बट it's really been it's been too inspiring for artists like us to get a filmmaker like him. जो इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो सोच है इतनी ओरिजिनल है कि एक्टर्स हम मरते कि ऐसे फिल्म पर फिल्म पे काम करें, ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करें. सो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है. हाय थैंक यू.
है भाई। ले तो लो उसको, प्रेम तो ले लो, प्रेम तो ले लो। नहीं आ पाएगा यार। आ जाएगा। I think Uday, darkness is, like I mentioned earlier, darkness is a very misused term, so I don't want to use the word dark. But yes, it's the most complex character I've ever played. People usually see me in a particular way as the boy next door, chocolate boy, romantic hero. I don't know what he saw in me that he, offered me this part. But इसने इतने रंग दिए इस कैरेक्टर में, मुझे नहीं, हर कैरेक्टर को. I think ऐसा राइटर है कि he writes for every character and he gives them a character. He gives them a plethora of emotions, of complexities, and that is very exciting to portray. The switching off, switching on part was very important to me because when I was starting this film, I became a father. Raha was born. So I was going on set and doing all these things and then going home and seeing my daughter. So it was a bit surreal. But when you're inspired, आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है. ये फिल्म हमने करीबन 100 दिन में खत्म कर दी. And I think बहुत जल्दी खत्म हुई है. Because पता नहीं लगा कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ फिल्म. And that only happens because you're working with inspired people. And Sandeep is definitely on top of the ladder where inspired people are. Hello. Hello, this is Seema Dhawan over here. अच्छा सब लोग. Okay. सर हेडमास्टर है, ये बोलेंगे. Hello, this is Seema Dhawan over here from Ranbir-Bobby Lifestyle Magazine. So my question is welcome to the entire team. My question is for Bhushan sir. How would you describe Animal? And Ranbir, what would you say about your character in it? See, it's a full commercial film with everything. You have music, you have performances, you have drama, you have action, everything what a person need to entertain themselves while watching a film. So it has everything in it. Basically adult rated कभी खुशी कभी गम. That's a nice one, correct. Headmaster. Ranbir, I asked you one question. What would you say about your character in it? My character, ma'am, it's free now. The trailer's out, so you can see what he is. We would like to build some mystery around it. It's just 1 week to release. But I think if I had to describe this story in a line, it would be about a man who goes to any lengths to protect his family. That's what the core of this film is. आप लोग कोरिस में बात करते हो? Yes, of course, but should we finish this and then फिर आ जाओगे? अच्छा, लास्ट में आप आ जाओ. मेरे पास वीडियो नहीं ले सकता, फोटो ले सकता हूँ, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ. I think thankfully मैं एक detached किस्म का इंसान हूँ. So I know what work is, I know what personal life is. So I never take my work home. You have to switch off as an actor. You have to have that ability because it's not fair for your loved ones. आप किसी कैरेक्टर में घुसे और घर आके मैं अगर इस इंसान के जैसे बिहेव करा था, मुझे मारती क्या हो गया तेरे को? So you have to have that. At the end we all are professionals. We have to develop some skills and you have to work with those skills. वो टॉक्सिक, वो सब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. मैं कुछ चेंज नहीं किया बिकॉज कबीर में प्रीति वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. या उससे ज़्यादा गीतांजलि इज इम्पोर्टेंट. तो कुछ चेंज नहीं हुआ, ऐसे चेंज हुए, कुछ फर्क नहीं पड़ा. Hi everybody. Hi everybody, this is Ashika from ENT Live. Hi. My question is for Ranbir and Bobby sir.
बहुत अच्छा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, फाइट सीन बहुत अच्छा है, बट अनिल कपूर सर ने कितनी हेल्प करी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो जानते हैं। वो हमारे ट्रेनर नहीं थे, बट वो खुद के एवरग्रीन स्टार है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। एवरग्रीन स्टार। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोल दूं कि मैं 1 साल से बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो एंड क्लाइमैक्स फाइट है, बॉबी सर के साथ शर्ट निकालनी पड़ेगी, तो मैं और मेरे ट्रेनर लगे हुए हम लंदन पहुंचे, पंप कर रहे। पहला मेरा शर्ट निकला, सडनली जब बॉबी सर आए और उन्होंने शर्ट निकाली, मैं और मेरे ट्रेनर बोले लग गए भाई। हमारी बॉडी कोई नहीं देखेगा। तो मेरे को इतनी टेंशन थी, मैंने इसको इतनी बड़ी बेयर बॉडी देखा, मैंने बोला यार रणबीर की बॉडी तो कमाल की है, अब कैसे यहाँ तक पहुँचूंगा, कहाँ पहुँचूंगा। लेकिन पर मेरे तो करनी पड़ी हम लोग इतने पुश तो 5-5 बजे उठ के 5 बजे उठ के जिम खुलवाया हम। तो वो होटल में जिम नहीं खोल रहे थे हमारे लिए, हमें पता नहीं कितनी चीजें करनी पड़ी हमें। अच्छा, अनिल सर का सवाल है, आई थिंक ही सिंस 40 years have really pushed the क्या बोलते हैं, push the bar where fitness is concerned. You know, if you see him today, he doesn't look like a year above 40 years old or 35 years old. So yeah, I mean, he is really a icon where fitness is concerned, and we all take inspiration from him. भैया बैठ के पूछ लो भैया। हेलो बैठ जाओ, कॉल आ रहा है। First of all, congratulations on the lovely trailer, and you all are looking beautiful today. My name is Rhythm Bora, and I'm a rapper. And Ranbir sir, I'm a huge fan, and I wrote 2 lines for you if I could just. Please, sure. एक आया कलाकार जो न जलता किसी आग से, the light to the stars, एक ही झलक और सब कांपते है। संजू वाली स्माइल रॉक स्टार with the mic, he's the king of the pride, RK सभी जानते हैं। Thank you, man. Thank you. Thank you. Headmaster जी, आप बोलो। हेलो, एक सेकंड, कोई टी सीरीज फैमिली बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सर भाई इधर आ जाओ, ऑडियो आ जाएगी, इधर आओ। हाँ जी, लाउड बोलना, लाउड। जी जी जी, टिप्स तो मैं बहुत दे सकता हूँ, लेकिन आई थिंक ये अभी 15 साल बाद जो मेरी प्रोफेशनल करियर हुई है, आई थिंक जो अंडरस्टैंडिंग मुझे मिली है, 3-4 चीज़ें। देखो, मेहनत और टैलेंट तो अभी सब में वो तो बेसिक है, वो तो आप में होना चाहिए, पर आई थिंक उससे ज़्यादा यू मस्ट हैव पेशेंस कि आपका मौका आएगा। यू नो, कभी कभी ये ऐसी इंडस्ट्री है कि साल बीत जाते हैं और आप वेट कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, यू नो, यू नीड टू अर्न मनी, यू नीड टू अर्न अ लिविंग, बट दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स यू टू बी पेशेंट, बी पेशेंट। दूसरी चीज़ होगी सैक्रिफाइस, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ पर्सनल लाइफ। यू नो, समटाइम्स आपके जो दोस्त अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं, हॉलीडेज पे जा रहे हैं, देयर इज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड सरेंडर जो जिसकी ज़रूरत होती है फॉर दिस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड द थर्ड थिंग आई वुड से इज लक। तो लक तो हमारे हाथ में नहीं होता, तो लक तो आपके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, तो जिस बारे में आप कर सकते हो वो है कर्म। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, इफ यू आर अ गुड पर्सन, यू डू गुड डीड्स, भगवान make sure that we'll take one last question, ladies and जब खत्म होगा तो ले लें। Hi, Ranbir this side. Hi. we come to Hello. wait. Ranbir this side on your left. Hello. Hi, हाँ जी, हाँ जी, हाँ Ranbir. जी, ऊपर. हाँ जी। Hello. Hello. Hi, Ranbir this side. Hi. Congratulations to the army in black today. मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि जो बॉन्ड हमें दिख रहा था, जो दिख रहा है ट्रेलर्स में, एक पापा था, एक बेटे का, वो डैड एनिमल के जो पापा हैं वो मिसिंग है, वो क्यों प्रमोशंस का हिस्सा नहीं हो पा रहे? भूषण सर, अनिल सर का अनिल सर वो एक्चुअली दुबई में है। हमारा जो ट्रेलर लॉन्च था ये एक्चुअली 21 तारीख होने वाला था, एंड आई थिंक वी गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बट उनकी डेट्स दुबई में थी, बट वी मिस हिम क्योंकि वो इतने अहम हिस्से हैं हमारे पिक्चर के, एंड दिस फिल्म वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट अनिल सर, सो वी मिस यू अनिल सर। झकास। We'll take one last question. रुकिए आप पूछे, हम इधर हैं, हम 10 मिनट तो रुकते हैं।
I think where violence is concerned, it's not really about action. You know, you hit someone and blood comes out because वो आप 10 सेकंड के बाद आप बोर हो जाओगे. I think violence is about the mind, what the human mind thinks, what the human mind is capable of doing. Where society is concerned, what is right, what is wrong, what is good, what is bad. Is Bobby sir the antagonist or I'm the antagonist? You know, who's the right person, who's the wrong person? So I think these are questions that as a society, as an audience, maybe they will start asking after this film. But where violence is concerned, I've always believed it's not about dishum, you know, it's more about what goes on in the mind. Okay, all I can say is that हम हर इंसान में एक बुरा होता है, अच्छा होता है, और हम अच्छे इंसान तब बनते हैं जब हम अपने बुरे को कंट्रोल करते हैं. लेकिन ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन में पड़ जाता है कि वो हमारे अंदर का जो गुस्सा है वो आता है बाहर, सबके साथ होता है. ये फिल्म में एक कहानी है परिवार की जहाँ पर ऐसे सिचुएशंस आते हैं, इसलिए आप मतलब देख रहे हैं लोगों में. So this is a part and parcel of life, and it's just trying to explain to the society कि कोई भी अच्छा बुरा ऐसा हम डिसाइड नहीं कर सकते, किसी की रीजनिंग हमें पता नहीं. So I guess that's what it's all about. एक सवाल पूछना चाहता हूँ. कल So, violence. See, for me, basically, when I watched Arjun Reddy or Kabir Singh, I didn't think it was a violent film, but I thought it was high on intensity. So, even this film like Animal, you see a bit of violence where people are killing each other, hitting each other and all of that. But if you see the emotion of the film, it's high on, like, it's high intense emotion that you don't really... I think Sandeep as a director is someone who is unapologetically real, because he's just like, this is my story and... So true. Huh? That's what I think. And I was like, because many a times when we were doing some scene, we were like, oh, but can you shoot it like this? Can you actually do it like this? And he was like, this is how I want my cinema to be. And it is so amazing because nobody else does that in cinema. Everyone sugarcoats everything that they want to say on cinema, and he doesn't do that. So I think that's something I appreciate him for. And I think he's a really smart director like that. And I think why there's so much conversation and why there's so much, you know, anticipation for the film is only because of that, because we are living people's lives, which is so real to the core, and we have nothing to lie about those characters, you know. So I think that's something I find absolutely amazing. एक बात बोलूं. हेलो. क्या हुआ? कल मुंबई में जब ये ट्रेलर दिखाया, Let him complete. Yes. Can we all? Yeah. जब मुंबई में कल ये ट्रेलर दिखाया गया तो सारे लोगों ने कहा ट्रेलर ऑफ द ईयर है, बेस्ट ट्रेलर है, कमाल का ट्रेलर है. मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या बात है, देखता हूँ जरा आके. और जब देखा तो बॉस ब्रिलियंट. और रणबीर आपसे एक सवाल है. मैंने सावरिया से लेकर देखा लवर बॉय की इमेज, रॉकस्टार से देखा, अभी लास्ट दोनों फिल्में ब्रह्मास्त्र देखी. इस किरदार को लेकर आपका क्या, हर किरदार के लिए आर्टिस्ट का एक रेफरेंस पॉइंट है कि हम ऐसे प्ले करेंगे, ऐसा मैनरिज्म होगा, वो इस किरदार के लिए आपका रेफरेंस पॉइंट है. आई थिंक मैं हमेशा जब संदीप से मिलता था, मैं हमेशा यही क्वेश्चन पूछता था कि संदीप मुझे एक रेफरेंस दे. मैंने कभी एक आई नेवर हर्ड एनीथिंग, मुझे ये सब चीज़ें महसूस हुई नहीं है. आई थिंक इवेंचुअली सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं मुझे मेरे पापा की याद है. आई थिंक जिस तरीके से वो बात करते थे, ही वॉज अ वेरी पैशनेट अग्रेसिव मैन. तो आई हैव ट्राइड टू Yes, ma'am. Push it. Dios! Hello. I know it's पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 जनरेशन एक साथ एक साल में
शासन ने मार दिया, बहुत खुशी हुई। और वो रोल कर गदर ने तो गदर बता दिया। So I'm very God has been really kind. It's all the love I have given. Finally, you've given you all something to see. So thank you so much. Hi Ranbir. Ranbir this side. Hi Ranbir. Deepika this side. Just one question. Yes, just one question. जस्ट वन क्वेश्चन कि आपने संदीप सर के बारे में बहुत सारी बातें कही, मुझे जानना था कि भूषण कुमार इस समय टी सीरीज के जरिए बहुत सारी ऐसी फिल्में ला रहे हैं जो दर्शकों को पसंद आ रही हैं। व्हेन यू वर्क अ प्रोड्यूसर लाइक हिम, कैसा एक्सपीरियंस था? आई थिंक एक्सपीरियंस विद भूषण सर इज हम एक्चुअली जब मैं भूषण सर के साथ डायरेक्टली काम नहीं किया, एक्चुअली 90% ऑफ हिंदी फिल्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस्ड बाय भूषण जी। तो मैं दूर दूर से पार्टी में मिलता था, यूज्ड टू अक्वायर मोस्ट ऑफ द म्यूजिक ऑफ माय फिल्म्स। आई न्यू हिम, बट थ्रू एनिमल आई गॉट टू नो हिम इवन बेटर, एंड आई थिंक ही इज अ सॉलिड सपोर्ट। जहाँ फिल्म का सवाल है, आई थिंक ही इज समवन हू डजंट इंटरफियर टू मच कि यार मेरे पैसे तो ये ऐसे करो वैसे करो। आई थिंक ही गेव संदीप द करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्रीडम, द करेक्ट अमाउंट ऑफ ट्रस्ट। जब भी उनकी ज़रूरत होती थी, he was always there, you know, he was always there to help us, he was always there to back us। तो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई होप कि हम साथ में बहुत सारे फिल्म्स करें साथ में। भगवान करे कि अगर एनिमल पार्ट 1 चले तो एनिमल पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बने। Two more questions, sorry. एक एक करके लेते ना। आप पूछो एक सेकंड आप नेक्स्ट हो, आप पूछो। नहीं गिरोगे, बहुत दूर। आजकल जैसे इंडस्ट्री में यूनिवर्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, तो क्या एनिमल का यूनिवर्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो इस पर डिपेंड है। वो पूछ रहे कि आप एनिमल यूनिवर्स है, स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, ऐसा कुछ एनिमल का यूनिवर्स है। जैसे आपकी अगली फिल्म प्रभास सर के साथ है स्पिरिट, वो कॉप पिक्चर है, ये थोड़ी गैंगस्टर है, तो क्या स्पिरिट और एनिमल साथ आ सकते हैं? कभी सोचा नहीं, बट इफ इट इज देयर आई लेट यू नो। किसी के पास बॉबी सर के लिए सवाल था? पूछो अच्छा देखो, अभी तो ये मैं कुछ हो नहीं सकते, तो अभी फोटोग्राफ्स कर ले। हाँ चलिए। That's all we have today, ladies and gentlemen. Thank you so much. Would like to invite on stage someone very important. और जहाँ तक टीम वर्क की बात हो रही है, इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर शिव चानंदा साहब from T series, ये कंप्लीट नहीं होगा आपके बिना यहाँ पे। We'll have a quick photo op with the team. Come on, we'll have this quick photo op. अरे माइक वाइक Guys, please cooperate यार, थोड़ा सा cooperate करो, सबको मौका मिल रहा है।
ऋषिका ऋषिका